Bismillahirrahmanirrahim. As we know that there are two main type of analysis in statistics which are used in social science. First one is known as descriptive statistic and second one is known as inferential statistic. Descriptive statistic is basically going to describe the data. There are numerous tests used in descriptive statistics like data normality that is checked through skewness and kurtosis. There are a number of other tests as well to check or measure the data normality, but skewness kurtosis is most widely used test in SPSS. After that, for data instrument reliability, Cron-Bosch alpha test is used. Data normality, we having the value of the range of skewness and kurtosis is +3 -3 as per Palin 2010. But there are a number of other ranges given by different authors. While when we talk about basically the skewness in the data normality revealed the scatteredness of data, while kurtosis revealed the peak of data. While in case of data instrument reliability, that is checked through Cron-Bosch alpha. Instrument reliability means that how much the instrument used for collection of data is consistent, or how much consistent result this instrument will give us if we use the same instrument in different time horizon or at different places. And the range of Cron-Bosch alpha is from 0 to 1, but if the answer of Cron-Bosch alpha is greater than 0.6, then the instrument is said to be reliable. After that, we having data validity. There are a number of thresholds for measuring the data validity, and data validity is basically measured through exploratory factor analysis. And in exploratory factor analysis, we having numerous thresholds, as I quoted earlier. First one is KMO, that is Kaiser-Meyer and Olkin-Meyer. If the answer of KMO is greater than 0.5, so it means that KMO is okay, and the value of BTS must be significant. That value of BTS is also present in the table of KMO. After that, we are going to check the number of factors and a variable have that are going to be checked through eigenvalues or through scree plot that is automatically calculated when we are going to run the exploratory factor analysis. After that, we will have to check the rotated component matrix in order to elaborate total number of factors that a factor has. I can't speak in Urdu. So these are the basic three tests that are used under descriptive statistics. When we move toward inferential analysis, first one analysis in inferential statistic is correlation analysis. और correlation जो है इसकी रेंज होती है -1 से +1 तक, और correlation पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. correlation की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमें टेबल में नजर आ रही है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन. इसका पूरा नाम है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन. तो इस कोरिलेशन के अंदर अब अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, जबकि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इंटीग्रेटिंग, ऑब्लेगिंग, कंप्रोमाइजिंग, डोमिनेटिंग एंड अवॉइडिंग, ये जो 5 फेसेट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के हैं. और हम अगर देखें इसका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ रिलेशनशिप, तो इंटीग्रेटिंग का 0.542 है, ऑब्लेगिंग का 0.491 है, कंप्रोमाइजिंग का 0.839 है, डोमिनेटिंग का 0.917 है और अवॉइडिंग का 0.951 है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे आंसर्स जो हैं सारे पॉजिटिव हैं. तो इसका मतलब है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट फैक्टर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस. अब हमने ये देखना है दूसरी चीज के पॉजिटिव तो है, क्या ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है. तो आप जैसे देखेंगे ये पियर्सन कोरिलेशन के नीचे दूसरा आइटम है सीग. तो ये सीग जो है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, और ये देखिए सारों की 0.000 है, और इसका जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड सोशल साइंस में यूज होता है वो 5% या 0.05 होता है. तो अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम हो या प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम हो, तो हमारा जो रिलेशन है वो सिग्निफिकेंट होता है. तो जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रिजल्ट रिवीलिंग दैट देयर इज पॉजिटिव सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between the factors of conflict management
positive significant relationship between conflict management factors and organization performance. The results are positive, that's why we use positive, and the results are significant because they are less than 5%. Furthermore, you can say that what does this significant mean here? Significant means that we can generalize these results on the whole population. आफ्टर कोरिलेशन एनालिसिस और आप इसके साथ दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब है कि विद द इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि जितना एग्जीक्यूटिव्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करेंगे, इसको कहते हैं इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। और डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन में भी है कि कॉन्फ्लिक्ट जितने रिजॉल्व हो या मैनेज हो तो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसके बाद हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली तीन टेबल्स हमारे पास आती हैं, एक होती है मॉडल समरी की, दूसरी होती है एनोवा की, और तीसरी होती है कोफिशिएंट की। मॉडल समरी में बेसिकली हम इस आर स्क्वायर को देखते हैं। आर स्क्वायर किस चीज को रिवील करता है कि टोटल कितने परसेंट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है उसमें चेंज आएगा बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, और उसके ये 5 फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 0.977 है, इसका मतलब है देयर इज 97.7% वेरिएशन in organization performance because of conflict management or its factors. Furthermore, ये जो हमारे पास एनोवा की टेबल है, इसके अंदर हम ये सीग वैल्यू को देखेंगे और इस एफ स्टैटिस्टिक को देखेंगे। एफ स्टैटिस्टिक और सीग वैल्यू की बेस पे मॉडल फिट होता है। अगर एफ के सामने ये सीग 0.05 से कम है तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल फिट भी है और सिग्निफिकेंट भी है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रिजल्ट ऑफ एनोवा टेबल एक्सप्लेनिंग दैट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ द मॉडल इज 0.000, that is less than 0.05, with the F statistic 1576.602, meaning that the overall model is fit, and or you can use the overall model is good, fit and significant। उसके बाद हमारे पास ये कोफिशिएंट टेबल है। कोफिशिएंट टेबल के अंदर हम बीटास को एक्सप्लेन करते हैं। बीटा हमें क्या बताता है? इंडिविजुअल इफेक्ट। ऊपर जो आर स्क्वायर था वो ओवरऑल मॉडल का इफेक्ट बता रहा है, अब बीटा हर एक फैक्टर का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग नजर आ रहा है -0.001, और ये जो इंटीग्रेटिंग है इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.867 जो कि 5% से ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि रिजल्ट्स ऑफ कोफिशिएंट टेबल रिजल्ट्स रिवील्ड दैट द वैल्यू with the 1 unit change in integrating there will be -0.001 unit change in in organization performance. That change is very minute and negative, but here negative doesn't make any difference because the results of integrating are insignificant. We cannot generalize it on the whole population. After that, outlagging having also the negative results, but they are also minor, that is -0.031, meaning that with the 1 unit change in outlagging there will be -0.031 unit change in organization performance, while when we check in the rest of 3 factors, that is compromising, dominating and avoiding, all having positive effect on the organization performance, and this positive effect is also significant because the p-value is less than 5%. After that, as we know that regression having many types, so here we use multiple regression because we having 5 independent variables. So multiple regression is used, and the issue that may arise in multiple regression is the issue of multicollinearity. What does multicollinearity means? When the independent variables relate with each other, then this type of relation is not acceptable for regression analysis. So for that very reason, if we are going to check the relationship among independent variables, we use collinearity statistics to measure multicollinearity, and here the result of VIF, that is variance inflation factor, if these results are less than 5 or 10, as in this column we see that all results are less than 5 or 10. So as per O'Brien 2007 or 10, maybe I forgot the year, maybe it is 2007 or 2010, but the reference is O'Brien 2007. If the results of VIF are less than 5 or 10, then there is no issue of multicollinearity. So these results are less than 10, so there is no issue of multicollinearity. Thank you very much for your zero cooperation.